वर्टेक्स ए से बीसी के पैरेलल एल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नंबरिंग कर दिया, एंगल्स का नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5, और फिर पैरेलल लाइंस थ्योरम का यूज किया तो अल्टरनेट एंगल्स हमें मिल गया। देन देयर सम वी हैव फाइंड आउट एंड प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर से डिक्टेट करे, हो गया सही है? नो सर, नहीं है। ठीक है ना? इट्स रिलेटेड Yes, sir. theorem is based on exterior angle. Exterior angle in a triangle. So how exterior angle is formed? Here is explained. If a side of a triangle is produced, the angle so formed is called the exterior angle. In figure you can see ABC is a triangle and BC is produced to D, then angle ACD is called exterior angle. This way you can produce CA, AB, and the exterior angle will be formed. The theorem 6.8 is based on exterior angle. This is, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. Means you can see in figure, ABC is a triangle, BC is produced to D, ACD is exterior angle. Naming it angle 1, 2, 3, 4, we see that angle 4 is exterior. We have to prove angle 4 equal to angle 1 plus angle 2, because it is given sum of the two interior opposite angle. तो चार को एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 और 2 है, क्योंकि नंबर 3 एंगल 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल, एज यू हैव रेड इन डेफिनेशंस and in your figure you can see. And angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree, because they make a linear pair also. So in proving, first it is given that ABC is a triangle, BC is produced to D, angle ACD is an exterior angle, to prove angle BAC plus angle ABC equal to angle ACD, or you can write angle ACD equal to angle ABC plus angle BAC. Proof. Angle BCD. BCD is a straight line. BCD is a straight line. So
BCD is a straight angle. That is angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. And also in triangle, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree, which we have proved in theorem 6.7. Equating these first and second, we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to angle 3 plus angle 4. Because 3 is in both sides common, therefore angle 1 plus angle 2 equal to angle 4. As angle BAC plus angle ABC equal to angle ACD. Hence proof. Any problem? No, sir. So what is सर the ये वाला थ्योरम फिर से समझा दीजिए. अच्छा, again I am repeating. You can see in your figure, in triangle ABC, BC is produced to D and the angle ACD is formed as exterior angle. We have to prove exterior angle equal to sum of the two opposite interior angle. अब ट्रायंगल में देखो नंबरिंग हमने किया 1 2 3. These are interior angles of a triangle and angle 4 is exterior. 3 and 4 make a straight line, linear pair. So opposite angle of 4 is 1 and 2. So we have to prove angle 4 equal to angle 1 plus angle 2. First we take in triangle ABC, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. Secondly, we take angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. And equating both first and second, because their right side is 180 degree. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to angle 3 plus angle 4. In both sides, we see that angle 3 is common. Therefore, angle 1 plus angle 2 equal to angle 4. As we can write it, angle ACD equal to angle BAC plus angle ABC. You can see on your screen. Yes, sir. In figure, if one angle of triangle is 130 degree, then find the angle between the bisectors of other two angles. This is a question. In figure you can see ABC is a triangle in which
angle A is 130 degree. OB and OC and BO and CO are the bisector of angle B and angle C. You have to find out the value of angle BOC. BOC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. So in triangle we see angle A equal to 130 degree. And bisector of angle B and C meet at O. BO is the bisector of angle B. Therefore, angle B means हमने इंडिकेट किया नंबर डालो 1 और 2. So angle 1 equal to half angle B and CO is the bisector of angle C. So angle 2 equal to half angle C. Angle 1 plus angle 2 equal to half angle B plus half angle C. And we can write it as half bracket angle B plus C equal to half 180 minus angle A. Why? Why I have written half sum of angle B plus B and C equal to half 180 minus angle A. Why I have written here? Because in triangle ABC, angle A plus B plus C equal to 180 degree. You can understand. Angle B plus angle C equal to, A को ट्रांसपोज करें 180 minus angle A. In both sides taking half, half angle B plus C equal to half bracket 180 minus angle A, that is 90 minus A by 2. So angle 1 plus angle 2 equal to half 180 minus angle A. So angle 1 plus angle 2 equal to half 180 minus angle A. Value of angle A is 130 degree. 180 minus 130, that is half angle 50 degree. उनसे कैंसिल हो गया. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 25 डिग्री. Angle 1 plus angle 2 equal to 25 degree. Now in triangle BOC, we take in triangle BOC, angle 1 plus angle 2 plus angle BOC equal to 180 degree. Angle sum property. By angle sum property. Therefore, angle BOC equal to 180 minus get angle 1 plus angle 2. So angle 1 plus angle 2 equal to 25 degree we have found out. So angle BOC equal to
180 minus 25 equal to 155 डिग्री। ये एंगल तुम्हें फाइंड करना था, व्यू करने थे ना। अब सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड OB माने BO and CO are the bisector of angle B and C. You have to find out the angle BOC. इस फिगर में देखो कि एंगल कौन सा हमें फाइंड करना है, BOC फाइंड करना है। सिंपल मेथड। Yes, sir. So in first we go to triangle ABC, right? In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle B plus angle C equal to 180 minus angle A. A को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। Now OB and OC are the bisector of angle B and C. So half angle B plus half angle C equal to half bracket 180 minus angle A. We can write it as angle B upon 2 plus angle C upon 2 equal to 90 minus angle A upon 2. लिख सकते हैं इतना, इतना समझ में आ रहा? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम आगे स्टेप करते हैं। तो एबीसी का तो हमारा हो गया। अब इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी, तो एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना? यस सर। एंड पुट द वैल्यू Yes. एंगल OBC दैट इज B/2, जो हम पहले निकाल चुके हैं एबीसी ट्रायंगल में। एंगल B/2 प्लस C/2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2, इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ट्रांसपोज एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस angle 1 plus angle 2. Angle 1 is B/2, angle 2 is C/2. Right? Then angle BOC equal to C/2 equal to 180 minus और A/2, ये हमारा कितना 130 डिग्री। 180 minus 130 that is 50 degree. Angle 1 plus angle 2 equal to 50 degree. So angle BOC equal to 180 minus 25 that is 155 डिग्री। सर यहाँ पर 25 कैसे आ गया? 25 इसलिए आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिगर में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने निकाला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 डाले हैं वहां देखो। यस सर। एंगल 2 25 डिग्री पहले हमने फाइंड कर लिया था। यस सर। वैल्यू यहाँ रख दी तो आ गया हमारा 180 माइनस 25 दैट इज एंगल BOC इक्वल टू 155 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल इन विच वी सी दैट
ABC is a triangle. AB is produced to BE and AC produced to D, and BO and CO are the bisector. O and meet at O. These are given. First we write the name of the angles as a symbol. We take X, Y, Z. ABC. इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल को हमने X, Y, Z से डिनोट कर दिया. Here we can see BO is the bisector of angle CBE. Therefore, angle CBE equal to half CBO. Angle CBO equal to half angle CBE. CBE equal to angle CBE can be written as 180 minus y. 180 minus y. And angle CBO equal to 90 minus y upon 2. हमारा एंगल निकल गया कौन सा? CBO. Similarly, angle BCO equal to 90 minus Z upon 2. Angle BCO equal to 90 minus Z upon 2. Now in triangle BOC. In triangle BOC, angle BOC plus angle CBO plus angle BCO equal to 180 degree. This is third. Angle sum property by angle sum property. Now we put the value of angle CBO and BCO. Angle BOC plus 90 minus y upon 2 plus 90 minus z upon 2 equal to 180 degree. And angle BOC equal to y upon 2 plus z upon 2, because 90 90 180 180 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 हो जाएगा. माइनस y upon 2 minus z upon 2 will change into positive form. So angle BOC equal to y upon 2 plus z upon 2. In triangle ABC, angle x plus y plus z equal to 180 degree by angle sum property. Transposing x, we get y plus z equal to 180 minus x. Therefore, in triangle BOC, in triangle BOC, angle BOC equal to half 180 minus x equal to 90 minus x by 2.
and angle X is denotes to A, so we can write 90 minus half angle A or 90 minus angle A by 2 as proved.